8 बजे का टाइम था, अभी 5 मिनट है मेरे पास, लेट हो रहा हूँ। कैब आ गई होगी मेरी। Professional camera. Activity here, so gonna keep our clothes here for you to change a little bit, you know, because otherwise when you spend with elephant sometimes it's dirty, smell ninging, you know. Good. Mobile camera. Shot. Okay? Yeah. Use elephant for riding too, and traveling circus, you know, travel circus around in Thailand. They still, but not many now, because we change their mind from the people like this. So that's why some of them here, like they rescue to live in this place. Okay, so that's the concept. But in the future, we hope everything is finished, you know, for like this better. Yeah, better for you and better for animal. So 2 different main species for elephant in the world. African and Asian. 8 ton, 10 ton, can for African. Asian elephant mostly around 4 or 5 ton. मेरे कपड़े देख के पता लग गया होगा कहाँ पर हूँ मैं। थाईलैंड हम लोग आते हैं, बैंकॉक घूमते हैं, पटाया घूमते हैं, लेकिन टी शर्ट देखते हैं हम लोग, उस पर हाथी की पिक्चर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ पर। लोग अमेजिंग फीलिंग आ रही है, बहुत सही यहाँ पे। थाईलैंड में कभी भी आओ तो चैंग माई विजिट करना, यहाँ पे आपको मज़ा आएगा। फुल डे टूर है मेरा, दिखाऊंगा अभी क्या क्या है क्या नहीं है। अभी नहाएंगे भी इनके साथ। No, no. Wrestling, hey! How? Your leg. Look away. You have to stand up. You want to challenge? No. Let's just have your food. Yeah, have your food. Tu veux plus donner? Non, tu arrêtes. Va écouter là-bas. अभी और खाना ले लिया इनके लिए, खिलाने जा रहे हैं। छोटे वाला बड़ा हरामी था, पूरा ही ऊपर बैठ गया मेरे और जान निकल सी गई थी मेरी। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर बड़ा हाथी होता उसकी जगह क्या हाल होता मेरा। हल्की सी चोट है लेकिन मज़ा आ गया, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। ये 12 लोगों का ग्रुप है हमारा और जिसमें से मैं अकेला इंडियन हूँ। बहुत कम लोग आते हैं चैंग माई, इंडियंस स्पेशली बहुत कम आते हैं। बैंकॉक या पटाया ही जाते, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू, आप अगर थाईलैंड आ रहे हो तो चैंग माई ज़रूर आना।
और यहाँ पे एलिफेंट टूर ज़रूर करना। मैं डिस्क्रिप्शन बिलो में डिटेल्स वगैरह दे दूँगा इसकी, कहाँ पे है कैसे है। और इसके करीब मैंने 2200 भाट मैंने पे किए हैं। 2400 भाट थे बट डिस्काउंट था मेरे पास, हॉस्टल से मैंने बुकिंग करवाई थी। अभी देख रहे हो आप जैसे कि मड बात ले रहे हैं ये दोनों, और इनका भी अभी ब्रेक है और हमारा भी ब्रेक है। अभी खाना खिलाया था हम लोगों ने इन सबको, और अभी अजब के मैंगोज़ और बनाना वगैरह हम सब ने इनको खिलाए। ऑसम फीलिंग है, मतलब लाइक नेचर में हम लोग जाते हैं। सर ये देखिए 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 देखिए, हम लोग जाते हैं सर्कस में, हम लोग सर्कस में जाते हैं, पैसे देते हैं उनको, देखते हैं डांस करते हुए, परफॉर्मेंस करते हुए। लेकिन आप लोगों को उसके पीछे की स्टोरी नहीं पता, क्या होता है क्या नहीं होता। चाकू से मारते हैं, कील से मारते हैं, दिखा होगा फेसबुक वगैरह पे आता रहता है। इनकी जो असली जगह वो ये है, यहाँ पे नेचर में। और मैंने मेक श्योर किया है कि जो सेंचुरी में देखने आया हूँ वो ऑथेंटिक हो, वो ऐसी ना हो कि सारा इवेंट होने के बाद उनको वापस से पिंजरे में डाल दे। तो ये मैंने मेक श्योर किया है यहाँ पे। तो अभी लंच में देखते हैं क्या है। मेरे हिसाब से वेजिटेरियन फूड मिल जाएगा। मैंने पूछा था टोनी से, जो कि हमारा गाइड है, तो उसने बताया कि वेजिटेरियन फूड है यहाँ पे और वही हम लोग सर्व करते हैं। देखते हैं कैसा है क्या होगा। गर्मी लेकिन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे अभी, तो हम लोग भी बहुत थके हुए हैं अभी, मतलब 1 घंटे में थक गए। लंच करेंगे, उसके बाद इनको नहलाएंगे और नहाएंगे इनके साथ, मज़ा आने वाला है। लंच हो गया। लंच में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, चावल थे, आलू थे और आपके चिकन था और तरबूज था। तो टेस्ट इतना बढ़िया था नहीं, क्योंकि वेजिटेरियन तो खाना इतना कुछ खास था नहीं मेरे पास ना।